Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. Here is your teacher Vipin Sharma with you. Dear students, one of the student asked me a question. Um, Sir, Earth is assumed to be a sphere. I said, yes, it is assumed to be a sphere, of course. Then he said, sir, if Earth is assumed to be a sphere, then we have to launch one satellite from the Earth atmosphere to the space. Sir, should we direct along the track 1 or should we direct along the track 2 or should we direct it along the track 3? तो हम इसे ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 किस डायरेक्शन में हम इसे प्रोजेक्ट करें? इट्स अ गुड क्वेश्चन, रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आप स्क्रीन पे देखो तो हमारे पास 3 ट्रैक्स मैंने ड्रॉ किए. ट्रैक 1 लाइक दिस, गोइंग टुवर्ड्स राइट. ट्रैक 2 going towards left, and track 3 going towards vertically up. He said, sir, I have to make this satellite to escape the atmosphere of the Earth. I said, though we people prefer the satellite direction west to east, because Earth rotates west to east. As a result of that, there will be an additional linear tangential velocity added to the satellite. But it's not so. According to the physics theory, you can direct the satellite in any direction because it has to escape the atmosphere of the Earth with escape velocity, which is 11.2 kilometer per second. So since energy is a scalar quantity, therefore you can direct it in any direction. When you can direct it in any direction, so it will escape the atmosphere of the Earth. Interesting. आप सैटेलाइट को किसी भी डायरेक्शंस में डायरेक्ट कर सकते हो. It will escape the atmosphere of the Earth because kinetic energy is a scalar quantity and it has to escape with half mve square. Is it clear? मतलब इसको मैं हिंदी में इसी में कर देता हूँ. The first part was in English. तो इसी लेक्चर में हमने किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है और वो जो सैटेलाइट है अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाए. अगर वो सैटेलाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाना नहीं चाहती, मतलब हम उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो किस डायरेक्शन में करें? ट्रैक 1 में, ट्रैक 2 में, ट्रैक 3 में? वेल, किसी भी डायरेक्शंस में करें बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो इसलिए ये किसी भी डायरेक्शंस में आप इसको कर सकते हो, ये स्किप कर जाएगी. होप इट इज क्लियर. सिंपल सा क्वेश्चन है. किसी बच्चे का डाउट था तो आप जस्ट डिस्कस. थैंक यू.